हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एंट्रम के पेपर्स जून 2023 जो कि लेटेस्ट है 7 सेमेस्टर के। बहुत मॉर्निंग आफ्टरनून डिस्कस करेंगे। ब्रिजिंग वाले भी देख सकते हैं बिकॉज पेपर्स सेम बने। सो बिगिन विथ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग पोइम गिवन है और आपने स्ट्रक्चरलिज्म जो है थियरी अप्लाई करना है इस पोइम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फार इज द साइमन डी बोवर कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट इन हाईलाइटिंग द plight of the women throughout the history? What are some of the remedies या solutions that can she suggest for their upward mobility, equity and equality in modern times? Question number 3 है, what is ideology in Marxism? Discuss different facets of ideology and give relevant examples. अगला पेपर है पोस्ट मॉडर्न फिक्शन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रीफली आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से पहला है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हाइपर रियलिटी इन पोस्ट मॉडर्न फिक्शन ऑन द रीडर्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी। पार्ट बी है, हाउ डज द रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव्स इन पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज करता है ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी। पार्ट सी है, व्हाट डज हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर रिवील अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमर टेक्स्ट इन टोनी मॉरिसन्स ब्लूएस्ट आई and how does it enhance the exploration of themes such as identity, beauty and societal standards? तमाम टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए वीडियोस में, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज जॉर्ज लुइस बोर्जिस यूटिलाइज करते हैं मेटाफोरिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ द labyrinth in the Alif to convey the notions of existential exploration and blur the boundaries between reality and imagination? इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिसमें से पहला है मंतारीज ट्रांसलेशन एक्शन मॉडल, दूसरा है पॉलीसिस्टम थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन विनोर्थीज कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर एंड एलाबरेट करना है ट्रांसलेटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ डोमेस्टिकेशन और फॉरेनाइजेशन को। क्वेश्चन 3 है, इलस्ट्रेट द पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थ्योरी एंड कमेंट ऑन इट्स implication for translator। अगला है स्टाइलिस्टिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स सपोर्टिंग योर रिस्पॉन्स विद ओरिजिनल एग्जांपल्स, जिसमें से पहला है फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स, दूसरा है रोल ऑफ वॉइस इन स्टाइलिस्टिक्स, यानी वॉइस चेंजिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द फॉलोइंग पोएम स्टाइलिस्टिकली taking into consideration the way various levels of language have been utilized for literary expression. The responses should be brief and substantiate with citations from the poem The Lotus Eaters, The Lost Leader, Lost Reader है poem का नाम और stylistic analysis करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, clause structure and organizations are important aspects of stylistic analysis, यानी क्लॉज एनालिसिस की बात कर रहा है। सो डिस्कस द वेज द ऑर्डर एंड द वेट ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द क्लॉज इन्फ्लुएंस करता है राइटिंग स्टाइल को। वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लॉज एनालिसिस, रिलेटिव लेंथ या हैवीनेस ऑफ द एक्स एलिमेंट या SVX जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था, आप देख सकते हैं। अमेरिकन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 1, write short critical notes on the following: deceptive simplicity in Robert Frost poetry, E. Cummings as a stylist, time shift in Death of a Salesman, Ben's influence on Willy Loman, which of the two neighbors in Mending Wall do you support and why? Question 2 है, Willy Loman is a salesman who travels but never arrives anywhere and his quest for meaning claims his life. What are possibly factors contribute to his tragedy? Question 3, Jay Gatsby's financial success is twisted version of American Dream and it is paralleled by his unsuccessful pursuit of Daisy Buchanan that leads to his death. Critically evaluate this statement with reference to F. Scott Fitzgerald का जो है novel Great Gatsby। Semantics and pragmatics। Question number 1, the underlined words in the following sentences can be used both डायक्टिकली एंड नॉन डायक्टिकली। आपने एक्सप्लेन करना है कौन से डायक्टिक यूज हुए हैं, डायक्टिक एक्सप्रेशंस। पार्ट बी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द प्रीसपोजिशन ट्रिगर्स इन देम एंड राइट डाउन द प्रीसपोजिशन एज वेल। पार्ट सी है, हाउ इज फ्लाउटिंग अ मैक्सिम डिफरेंट फ्रॉम वायलेटिंग अ मैक्सिम
Explain with examples. Question 2, Part A. Read the following conversation between two teachers and analyze in the light of the locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts. Part B. Discuss any three limitations of speech act theory. Or question 3 है indirect speech acts serve politeness, however they can be risky and costly. Discuss the statement giving suitable examples from your classroom. American literature. Question number 1, write a short critical notes on any four of the following. इनमें से किसी भी 4 पे critical notes लिखने हैं, जिसमें से पहला है the language of the physical violence in E. Cummings or sweet spontaneous. दूसरा the flute music in Death of a Salesman. तीसरा character of narrator in The Great Gatsby. Significance of Willy Loman house. Or which of the two neighbors in Mending Wall do you agree and why? Question number 2 है pinning his hopes on the next generation, Willy Loman trades his life for the dream that he could not realize. Critically analyze this statement with reference to father-son relationship in author's Miller Death of a Salesman. Question number 3 है in The Great Gatsby, Fitzgeralds represent a corrupted version of American dream which is founded on appearance and consumerism. Agree or disagree with convincing references based on the novel. अगला है stylistics का. Analyze the following poem stylistically. Poem दिया गया है, आपने stylistically इसको analyze करना है. And write the detailed notes on the following, जिसमें पहला है foregrounding, morphological stylistics और style. और क्वेश्चन नंबर 3 है clause is one of the most important elements of stylistic analysis. Discuss in detail by explaining the different parts of a clause. Semantics and pragmatics. Question number 1 है what are felicity conditions? Keeping in mind the idea of context, think about situation where appropriate speech acts will be performed according to the event and discuss the felicity conditions that are required to accompany the speech acts. और part B है explain implicature in detail by giving at least 2 appropriate examples. और question 2 है what are the dyadic expressions? What role do they play in semantics and pragmatics? Discuss different kinds of dyadic expression by giving examples and substantiate your answer. Question number 3 है employ the various speech acts. How do we determine the positive and negative phase? How is the concept of phase linked with the politeness? Discuss them with and give suitable examples. Translation studies. Question number 1, write note on the following text type. House's model of translation assessment. Question number 2, explain the two terms foreignization and domestication according to Venati, and what are the 5 areas in which these two concepts can be further investigated. Question number 3 है elaborate the following core in current theoretical discourse. And then to speak of the post-colonial translation is little short of tautology. In our age of valorization, migrancy, exile, and diaspora, the word translation seems to have come full circle and reversed from its figurative literary meaning of interlingual transaction, of its etymological physical meaning, of locational dispersion. Translation seems to have been translated back to the origin. Statement दिया गया है, analyze करना है. Postmodern fiction. Question 1, part A, what is Aleph? Describe how Borges constructed an image of the Aleph in the short story. Briefly explain how Gabriel Garcia Marquez incorporated magical realism in 100 Years of Solitude. Question 2 है what is the significance of inframing narrative of Toni Morrison's Bluest Eye? How does it contextualize and highlight the underprivileged lifestyle of African American communities, especially that of breedloves? Provide with examples. Question 3 है write an essay on the most significant features of postmodern fiction and give detailed instances from the novels you have read. Literary theory. Question number 1, carry out the formalist analysis of the given poem. Formalism का जो theory है वो apply करना है. Question 2, discuss the basic tenets of the Marxism. How do base structure, superstructure, and ideology function in Marxist discourse? Give relevant examples. Or discuss the Aline Showalter and Virginia Woolf's contribution to feminism.
how far are their assertions relevant to the society that we live in. So this is all about this video.